नगीन फातिमा। यस सर। जी बेटा, क्या नाम है, कहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम? सर बताती हूँ मैं आपको। जी बेटा। सर हमने ओरिजिन फैक्ट्री तक पढ़ा था। आपने ये काम दिया था कि आपने करके आना। आयशा कौन था अभी जो आकर गायब हुआ है? सर आयशा असलम होगी मुझे लगता नहीं, है। वो आयशा असलम नहीं थी। पता नहीं सर फिर। लास्ट क्लास में भी एक स्टूडेंट ने बदतमीजी की है आयशा के नाम से। आई थिंक वही सर ये थी। वही होगी फिर। एनी हाउ, जी ओके। जोनाथन जावेद, थैंक यू नगीन। जोनाथन जावेद। जोनाथन जावेद। उस्मान अली। उस्मान अली। जी उस्मान अली। यस सर। आपका माइक अनम्यूट नहीं उस्मान हो है। रहा था? अब हुआ सर। हाँ जी, पहले नहीं हो रहा था, राइट? नहीं सर, हो रहा था, नहीं हो रहा था। ओके, थैंक यू। Jonathan Javed, can you unmute your mic? Please try. Jonathan Javed. जी जोनाथन जावेद। जी सर। पहले माइक आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था? नहीं सर। ओके, एक अभी आपने म्यूट खुद नहीं करना, मैं देखता हूँ यहाँ से मैं म्यूट कर सकता हूँ। जोनाथन जावेद, जी आपने सर। म्यूट किया था कि मैंने किया था? सर आपने किया था। ओके, सो बेटा किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए माजरत के साथ मुझे ये ऑप्शंस को वेल करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले भी कुछ जो क्लासेस हैं आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली होगी, कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा बदतमीज़ी करते हैं दौरान क्लास। तो मुझे आप सबके माइक्स को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग इस तरह की कोई हरकत करेंगे, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। शायद वो आपकी क्लास में भी आके बदतमीजी ना करे, तो प्लीज़ इसको आपने माइंड नहीं करना। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो अपना हाथ खड़ा करेगा, तमाम स्टूडेंट्स का नाम रोल नंबर मेंशन होगा, CR GR और अदर स्टूडेंट्स अपनी तवज्जो भी रखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी और का नाम यूज़ किया है तो वो उसी वक्त बताएंगे, उसे क्लास में से रिमूव कर दिया जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है, कोई और है, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? आई होप यू गाइज विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और जो मेरे कहने पे जवाब नहीं देगा एज पर रूल उनको क्लास से निकाल दिया जाएगा। नगीन फातिमा एंड जोनाथन जावेद, प्लीज mark the attendance and let me know from where we have to start. जी जोनाथन। जोनाथन जावेद। जी 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 सर। कहाँ तक बेटा पढ़ा था? जोनाथन जावेद और नगीन फातिमा, आप दोनों ने काफ़ी नज़र रखनी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात आप लोगों से करूँगा। आप CR एंड GR हैं, तो आपने मुझे बताना है अगर आपके नाम से कोई और आ गया तो। कहाँ तक पढ़ा था जोनाथन? सर स्लाइड्स ये भी पढ़ दिया था सर। अच्छा, नज़र आ रही हैं स्लाइड्स, वेरी गुड। जी। नहीं, फुगुत मेरा ख्याल शुरू पीछे करना था। पीछे पीछे सर, पीछे राइट, वो शुरू करना था अभी। जी ओके जी। ओके, थैंक्स 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 जोनाथन। Okay, so now we are going to start about Fugu. Fugu as a Fugu actually represent करती है फिशेस को, फिशेस के क्लैड को या जिनोम को। पहले हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा समराइज करें जो हमने पहले पढ़ा। उसमें हमारे पास सेगमेंटल डुप्लीकेशन आ गया था, और सेगमेंटल डुप्लीकेशन के अलावा हमारे पास डिफरेंट जिनोम्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। और
डिफरेंट क्लैड्स हमने देखे, कब कौन सी स्पीशीज जो हैं वो डाइवर्ज की, कितने मिलियन ईयर्स बैक, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और ये सब कुछ। अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जोनाथन आयशा, हु इज आयशा? आयशा कौन है? देख लें जनाब, वो फिर आया और चला गया। ठीक है, मैं आपकी क्लास लॉक कर रहा हूँ, जो बच्चे बाहर रह गए हैं वो बाहर ही रहेंगे अब। जोनाथन जावेद, कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम मैंने? जी सर। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने कोई? नो सर। नहीं दिया था? चलें, जी ओके, थैंक यू। सर दिया था आपने। जी बेटा तक्षल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, वही कहना था। ओके सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं ये म्यूट था, मैं अभी देखता हूँ दोबारा शुरू से। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। सो हम बात कर रहे थे उसके बारे में, स्पीशीज डिफरेंट कैसे डाइवर्ज हुई, और एवोल्यूशन के बारे में, और जीनोमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे एक फिगर आपको नजर आ रही होगी स्लाइड पे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 450 million years back there was a divergence between fishes and Homo sapien as per available data. So you can see that the genome of Fugu is of almost 400 MB, and the genome of Homo sapien is 3200 MB, almost 8 times more, yes, or 8 times more than Fugu. और आप देख सकते हैं कि फिश में भी तमाम के तमाम वही वाले सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, एबीसी। लेकिन वो 400 एमबी के जरिए तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इधर 3200 एमबी के साथ तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल का यही मतलब कहा जा रहा है कि वो थोड़ा है
लेकिन वो अपने तमाम के तमाम काम जो हैं वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी फुगो। फुगो को आमतौर पे फुगो, मिडाका, स्टिकलबैक, ये फिशेस हैं और इनको फिश के जो ग्रुप या क्लैड आप कह लें उसमें फाइलोजेनेटिक ट्री में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और नॉमिनेट करने के लिए किसी न किसी फिश को लिया जाता है और इसके लिए फुगो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। फुगो, स्टिकलबैक भी यूज़ होती है, मिडाका भी यूज़ होती है। तो हम फुगो के बारे में देखेंगे कि फुगो एक फिश है जो एक स्पेसिफिक फैमिली के साथ बिलोंग करती है और ये सी में मौजूद होती है, जैसे कि आपको पता है फिशेस जो हैं, और जापान और चाइना में ये ज़्यादातर पाई जाती है। सीक्वेंसिंग एंड असेंबली इसके होल जीनोम शॉटगन मेथड के ज़रिए किया गया है और आई होप यू गाइस रिमेंबर द मेथड ऑफ होल जीनोम शॉटगन। और 3.71 मिलियन पासिंग रीड्स आए इसमें, जिनको अब बाद में अलाइन किया गया। मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ ये होल जीनोम शॉटगन मेथड। इसमें बहुत सारे आपके पास रीड्स आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि टोटल आप चलें समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि 100 बेस पेयर का आप कह लें जी कि जीनोम है और अब आपने उसको सीक्वेंस करना है। तो टोटल आप 100 को सीक्वेंस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मैनी लिमिटेशंस। तो क्या किया जाता है, उसके डिफरेंट छोटे छोटे क्लैड्स या छोटे छोटे पीसीज को सीक्वेंस कर लिया जाता है और वो जो पीसीज हैं उनको बाद में अलाइन कर लिया जाता है। उन पीसीज को रीड्स कहा जाता है। सपोज करें 1 से 3 तक एक रीड बन गया, 2 से 5 तक एक रीड बन गया, 4 से 9 तक एक रीड, उसके बाद 7 से 12 तक एक रीड, 11 से 20 तक एक रीड, 18 से 25 तक एक रीड, 20 से 30 तक एक रीड, फिर इस तरह बहुत सारे रीड्स आ जाएंगे। तो उन रीड्स को बाद में अलाइन कर लिया जाता है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे सीक्वेंस अलाइन हो रही है आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रीड नंबर 9 और 10 जो है वो एक ही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें भी होल जीनोम शॉटगन मेथड को अप्लाई किया गया और जब ये शॉटगन मेथड के जरिए सीक्वेंसिंग की गई फूगो के जीनोम की, तो ऑलमोस्ट 3.71 मिलियन पासिंग रीड्स जो हैं वो आए। उन तमाम रीड्स को जब अलाइन किया गया एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के जरिए ताकि एक स्पेसिफिक और हमें पूरे पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग मिल जाए, तो 12381 स्कैफोल्ड जो हैं वो हमारे पास आए और एक जो स्कैफोल्ड है उसकी लेंथ 2 KB से ज़्यादा थी। तो टोटल जो जीनोम सीक्वेंस हुआ और जो उसका वैल्यूज़ निकली वो 400 MB में थी और ये जनाब 2005 जून में ऑलमोस्ट 15 years and 1 month बैक ये जीनोम हुआ। फूगो का जो जीनोम है वो सीक्वेंस हुआ और इसमें प्रोटीन कोडिंग जीन्स 30,000 देखे गए। अगर आप आजकल का डाटा देखेंगे रिसेंटली तो ये मे बी रिड्यूस हो गए हों क्योंकि बहुत सारा डाटा आपको पता है जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, डाटा आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। और इसमें 162 सूडो जीन्स देखे गए और RNA जीन्स 620 देखे गए। इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपैक्शन ऑफ फूगो लोकस व्हेन कंपेयर टू ह्यूमन लोकस, इसमें 2 लोकस दिखा दिए गए हैं, एक फूगो का है और एक ह्यूमन का है। ऊपर वाला अगर आपको ये कर्सर नजर आ रहा है तो फूगो का है और नीचे वाला ह्यूमन का है। ऊपर वाला 0.29 MB का है और नीचे वाला 3.4 MB का है। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको कि ह्यूमन का जो जीनोम है वो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स का है, जिसको आप 3200 MB का कह रहे थे, और जो फूगो है उसका ओनली 400 MB का जीनोम है। तो इसीलिए इसकी लेंथ, इस स्पेसिफिक पैच की लेंथ ह्यूमन में 3.4 MB है और फूगो में इस लोकस की जो लेंथ है वो 0.29 MB है। ऑलमोस्ट मे बी 10 मोर देन 10 टाइम्स अगर आप देखें तो समहाउ। ये देखें इधर भी ATF2 है, ATF2 जीन, ATP5G3 सेम हेयर, देन Q9C, Q9CE08 हेयर,
EVX2, EVX2 here, and now we have, sorry, now we have PDE11A, AGP5 and NFE12L2, ये सारे सेम। एक ये ह्यूमन में एक्स्ट्रा है, MTX2, ये जो ब्राउन कलर में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं 3 स्पेसिफिक जीन्स इस स्पेसिफिक लोकस के ऊपर, ये ह्यूमन में एक्स्ट्रा है, ये सेगमेंटल डुप्लीकेशन से आए, इंसर्शन से आए, ये एक बात की स्टोरी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी 3, 4, 9, 10, 11, 12 जीन्स हैं, यहाँ पे भी 3, 4, 9, 10, 11, 12 एंड 13 आल्सो हियर, और 8 और 1 और MTX2 जो है वो यहाँ पर न्यू है इसमें। उसके बाद फुगो का जो जीनोम है वो, उसमें इंट्रॉन्स हैं, लेकिन इंट्रॉन्स उसके जो हैं वो बहुत कम लेंथ के है एज कंपेयर टू ह्यूमन। Fugu genome is compact partially because introns are shorter compared with the human genome, as human has longer introns, longer and longer introns. As I remember last time we discussed about DAOA gene, and we found that there is a gene desert of almost 3 MB from forward and backward to the gene DAOA for in primates. So there is a large amount of introns sequences are available in human genome. However, in Fugu genome, there is small amount, or you can say very less introns sequences as compared to human genome. So in Fugu genome, there are almost 500 large introns that are almost 10 kb in size each of them. However, in human, there are 12,000 introns, almost more than 20 times or 25 times or 23 times more than from Fugu, and each intron is almost of 10 kb in length. Length is almost similar in Fugu and human, as human has 12,000 introns. However, Fugu has only 500 large introns. So there is it's a huge gap, you can say, in the values of 500 and 12,000. So because of that 12,000 introns, the genome of human just moves to 3200 MB, and because of very less introns, only 500, the genome of Fugu is of 400 MB. Total number of introns are same in two lineage. Human has almost 16,000, yes, 1,61,536 introns. Fugu has almost one, yes, 1,52,000, almost similar, almost even 9,000 introns difference. However, the length of larger introns are very much in human as compared to Fugu. Gene loci in the present assembly occupied almost 108 kb of euchromatic, 320 MB, or about 1/3 of the Fugu genome, emphasizing the density with which they packed in Fugu. So here we have a comparative graph of the distribution of introns in Fugu and human. So on the y-axis we have the number of introns, that is from 1 to 1,100,000, and on x-axis we have intron size in base pair, that is from 78 base pair of intron to 9,551 base pairs. So in red color we have the introns of Fugu. However, in blue color in this graph, the human introns are depicting. So you can see from this cursor that Fugu has only 1, 2, 3, and 3 introns that is more than 10,000 in number, and these are in only have 78 base pairs. 10,000, or maybe you can say 30,000 of Fugu. From 1,52,000 we have only 30,000 of genomes, introns in Fugu, that is of 78 in length. However, you can see in
Human, okay, we can, if we can analyze it more, that how many number of introns less than 100. So there is no a single intron that is less than 100 in human. So you can see, however, in Fugu, almost, if you can see from here, almost 60% of introns, number of introns are less than 100 in this category. And here is so many introns that is more than 100 in number and has these values as compared to Fugu. I hope you can understand from this specific graph that human has so many introns, as Fugu also has, in the number of introns, Fugu is also near to human. However, the number of intron size or base pairs in that introns is much lesser as compared to human. That's why as we already discussed that Fugu has only 500 larger introns. However, human has 1200 larger introns. So comparison of large mammalian introns with their Fugu homologs. So we are studying Fugu because Fugu is considered as the good outgroup or the representative of the fishes clade of the phylogenetic tree. So here we have some gene names in the first column, like HD, HISRS9, C9, NF1, and then we have three more. Then we have size of gene in human and Fugu. You can see in human it is 170 kb. However, in Fugu it's 23. Similarly, we have these values. So number of introns, there are number of introns in 1, 2, 6, 29, 40. And in the second half of this table, you can see that size of intron is in the first one is 11,926, almost 12,000. However, in Fugu it is only 537. Similarly, you can see here we have 11,927, almost 12,000, and here only 92. Here we have this one, 54,916, and here we have only 2,200. So you can imagine from this that how the intronic region in human has much more sequences as compared to Fugu. And we already studied about that these sequences we observe from segmental duplications, or sometimes total duplication of the genome, that we just if we can study about Triticum aestivum, that is the scientific name of as I remember, scientific name of wheat. And and scientists claim that it is a hexaploidy 6x. The genome of wheat just double or multiply 6 times the complete genome. That's why 6 copies of the whole genome is present in Triticum aestivum. So here we have a ensemble gene prediction pipeline for Fugu gene predictions. It's bit old one, and if you can go to ensemble now, maybe it's much different from this one, because this is the old one figure. So it's better to have a look to the ensemble database and see this specific figure of genes that represents the Fugu. Identifying novel human genes by using Fugu genome as a reference. There are almost 30,000 Fugu proteins, or nowadays I hope it will be less than that. And if we will perform BLAST P with the E value of less than 10 to raise power minus 3 against the human genome or human proteome, then we can see that almost 8,000 we have, plus 22,000 matches with human genome, with the e value of greater than and equal to 10 to raise power minus 3. Mask human genome with the 22,000 matches of the human genome. And then if we can perform t-blast10, as you guys know the function of t-blast10, there is 1800 matches against the masked human genome. That you can say the potentially novel genes of the Fugu, as people is less working on Fugu, and
people are more working on human. If you align the Fugu genome with human genome, you can find the similar proteins that is not already reported in Fugu, however have similar sequences in Fugu and human, and you can report and do some further experiments on it. Now we have, now we have the same chart. We are going to continue. After that we have ensemble gene build system and NCBI protein database. If we can perform blast P again, you know, blast P is for protein blast. So 961 novel prediction remains that did not overlap with existing human proteins. So first we have almost 2200 matching proteins. However, here we have 961 novel predictions remains that did not overlap with existing human proteins, that the human has specific number of proteins, and the 961 proteins after this blast P analysis did not align with any other human protein, and you can claim it as a novel protein in comparison with human also. So transposable elements in the Fugu genome. Last time I remember some student just answer the query of transposable elements or transposons and different one, and I hope you guys still remember the concept. So 2.7% of Fugu genome consists of intersuppressed repeats, whereas in mammals the density of IRs quite higher, that is almost 35% to 45% of the genome. Despite of this low abundance, the transposable elements have been more active and probably still very active in the Fugu genome. There are at least 40 different families of transposable elements in which the nucleotide substitutions have accumulated to a level of less than 5%, reflecting a very young age. Human genome contains only 6 families of such a low divergence level. In Fugu, we have 40 different families of transposable elements. However, in human, we only have 6 families. So you can now analyze that how Fugu has great divergence of transposable element, as there are 40 different families. So there is it's a graph, or it's a table of transposable elements in the Fugu genome. Transposable elements, line, ALU, LTR, LTR, these are the names of that transposable elements. In humans, line are almost more than 500,000, and ALU are 100,000. Yes, 100,000, more than 100,000. 7% of LTR and HG, and 2.7% of HG LTR also in this one. However, in Fugu, it's only 6,400 in comparison with 500,000, and here in comparison with the 100,000 of human, Fugu only has 5,000. Similarly, 3,000 and 8,000. So conservation of human Fugu gene syntenic regions. So as we study about the DAOA gene last time in our last lectures, we just have a look to the synteny of that gene, that how many genes we have on the right side of that gene and how many on the left side, or you can say on the forward direction or in the backward direction, and how these genes just insert and delete. We just analyze this synteny in last lectures in detail. So please recall this concept and try to understand here the same syntenic region concept of human and Fugu gene with conservation. Nature of conserved segments between Fugu and human by looking at the frequency distribution of segments for discrete number of unrelated intervening genes. A total of almost 3.8%, that is 12.6 MB of Fugu genome, is in segments with 0 intervening genes. That you can say as a perfect conservation. Then we have 5.0%, 7%, 9.3% in segments with 1, 5, and 15 intervening genes respectively. So here is the conserved synteny among human chromosomes and Fugu scaffolds. These Fugu scaffolds we just extracted from that shotgun method of sequencing. So here is the human chromosome number 1, and this is the number of unrelated intervening genes we just observed from this you can say a scaffold of the
Fugu, like zero, how we have number of unrelated intervening genes. In zero we have only here, here, and these 4 times. However, 1 to 5 we have so many, and in the last one, 160 to 320, we have a bunch of, you can say, scaffolds of Fugu observed as in comparison with the conserved synteny of human chromosome number 1. Okay, now we have another concept of 2R or not 2R. It's very interesting concept. And if anyone has any question, please raise your hand. We will summarize our this lecture here, and then we will continue the other concept from in next lecture, inshallah. Anyone has any question, please raise your hand. If anyone has any question, please raise your hand. Jonathan Javed and Nagin Fatma, please mark the attendance. Jonathan Javed, any question? No, sir. Okay, now we are going to summarize our lecture here, and now then we will continue this concept in the next lecture. Thank you so much everyone for joining.